One second. So this one, I'll just redo the balancing of the last equation. Okay, remember in a redox reaction you have the number of electrons gained and lost, they got to be equal. So इसका ये हम हटा देते हैं, हम खुद से बैलेंस करते हैं. So अच्छा, now what will happen over here is that phosphorus has an oxidation state of 0. N over here, uski nikal lo oxidation state. I don't know what that is, but it's going to be what? X and minus 2 times 4, and the whole thing has a charge of equal to minus 1. So what would it be? It's going to be, I think, plus 3. I guess it's plus 3. Okay, correct me if I'm wrong. And you've got O or H har jagah minus 1, plus 1, minus 2 yehi hote hain. Acha, H2PO2 minus 1. So let's find out H is plus 1, that's into 2. P, you're not sure, oxygen is minus 2 times 2. And the whole thing is equal to minus 1. So pata nahi kya aa raha hai isko. If you solve, it's going to be minus 1. Minus 2 times 2 is minus 4. So the other side is plus 4. 2 into 1 is 2. On the other side, it's going to be minus 2. So kya ho gaya? Minus 3 plus 4, and that's plus 1 aa raha hai. So this over here is coming out to be plus 1. N over here is plus 1. Acha, ye koi confirm kar le if the oxidation states are all calculated correctly. Acha, O और H का issue नहीं है. O और H जो है ना, they are acha, they're all H is plus 1, O is minus 2. So what happened to phosphorus? It goes from 0 to plus 1. So that means it lost exactly 1 electron. Right? It lost one of the phosphoruses, lost 1 electron. Nitrogen goes from plus 3 to plus 1. So that means it gained how many electrons? Plus 3 to plus 1. So इसने 2 electrons gain किए. So it has gained 2 electrons. तो दोनों को बराबर होना चाहिए. तो इनका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए? This is going to be multiplied by 1. And this is going to be multiplied by 2. तो number of electrons gained और lost का रेशियो 1:2 होगा. कि ये 1 होना चाहिए, ठीक है, और ये 2 होने चाहिए. अब मसला ये है कि अगर मैं इसको 2 करूँ ना, तो phosphorus पहले ही 4 है. तो I mean, I know the ratio. I know that the ratio should be 1:2. लेकिन I can't have 2 phosphorus क्योंकि मेरा starting point ही 4 phosphorus है. So what I'm going to do is I'm going to change इस ratio को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ. I'm going to make this 4 and I'm going to make this 2. So अभी भी electrons gained or lost equal है. Okay, this is 4 electrons and this is 4 electrons. So there should be 4 phosphoruses. So we already have 4 phosphoruses, so that's fine. And on this side we should have 4 phosphoruses as well. इसका मतलब है यहाँ पे 4 phosphoruses होने चाहिए, ठीक है. और nitrogens कितने होने चाहिए? There should be 2 nitrogens. तो यहाँ पे nitrogen जो होना चाहिए वो 2 होने चाहिए, वो 2 हो गया. और इधर it's पहले से ही 2 है, तो that's already 2. आखिरी जो चीज रह गई है वो बस water और OH को बैलेंस करना है. That's the only thing that is left. वो आपने बस काउंट करके उसको इक्वल कर देना है. तो मतलब वो हम 2 और 3 एंड में इनके आ रहे थे. So these were balanced the same way. So remember, the first thing is you have to balance the number of electrons lost and gained. Is this equation clear? ये clear है सारों को? Yes, sir. अच्छा, अब हम स्टार्ट करें उसका A2 का electrochemistry, ठीक है. So remember, you have all these redox reactions, right? तो क्या हो रहा था redox reaction में? Somebody is gaining electrons, somebody is losing electrons. अब हमेशा आज से पहले ना ये इक्वेशन बना के आपको दी हुई होती थी. अब इशू ये कि अगर खुद से बनानी पड़ जाए तो क्या करोगे? क्योंकि पता ही नहीं है कि P ने क्या करना है. मतलब अगर मैं बाकी सारा हटा दूं, so how do I know that P is going to gain 3 electrons? I have no idea how it's going to gain 3 electrons or whether it's going to gain 3 electrons.
आयोडीन क्या करेगा? आई हैव नो आइडिया व्हाट इट विल डू. तो मतलब अगर मैं रैंडमली ना, लेट्स से I try to make a redox reaction and I've got IO3 -1 and I've got NO2 और वो पूछ रहा है बताओ क्या होगा. तो मुझे तो नहीं पता कि क्या होगा. ठीक है, मुझे कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास कि मैं पता लगा सकूं कि होगा क्या. मुझे नहीं पता आयोडीन को क्या होगा, मुझे नहीं पता एन को क्या होगा, मुझे नहीं पता किसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, किसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है. सो द बिग क्वेश्चन इज who is going to gain electrons or lose electrons? अच्छा, who's going to gain or lose electrons? पहला तो ये क्वेश्चन है. फिर दूसरा ये भी नहीं पता कि भाई अगर वो चलो लूज करेगा तो कितने लूज करेगा, मुझे क्या पता. अगर लेट्स से कोई मुझे बता भी देता है कि जी आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी लॉस्ट एंड गेन. और गेन्ड. ठीक है, वो भी आइडिया नहीं है. और फिर तीसरी चीज है कि चलो अगर मुझे पता लग गया कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने, तो कितना विगरस रिएक्शन होगा. ठीक है, मतलब रिएक्शन होगा भी बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही तेज होगा, क्या होगा. तो द लास्ट पार्ट वुड बी के will it be a feasible reaction, will it happen very fast, will it happen very slow. तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं that need to be answered क्योंकि that is how you're going to predict what a redox reaction would look like. तो ये सारा हमने ना इसमें डिस्कस करना है कि अगर दो रैंडम कंपाउंड्स आपको मिल जाए तो आपको किस तरह पता लगेगा कि भी इन्होंने करना क्या है, किसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, किसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है. उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, 6 करने हैं, 10 करने हैं, कितने करने हैं ये भी नहीं पता. और कितना विगरसली होगा, हाउ फास्ट वुड बी द रिएक्शन. तो ये सारा हम फिगर आउट करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. ये हमारा सोल्यूशन है इसका कि यू फिगर दिस आउट. अब इसको गौर से देखना बोर्ड. अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. अच्छा, इनका इट्स नोन एज ई विद अ नॉट ऑन टॉप. नॉट जो होता है ना वो स्टैंडर्ड के लिए होता है. लाइक इवन इन इंथैल्पी चेंजेस स्टैंडर्ड जो होता था ना वो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती थी. Standard conditions were 25 degrees centigrade or you can say 298 kelvins. Temperature sorry, concentration was 1 mole per dm cube, and if there was a gas, its pressure should be 1 atmosphere. अच्छा, इसको समझाने से पहले ना अभी ये है क्या चीज, हमें नहीं पता ये क्या चीज है. मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेता हूँ. डेफिनेशन वैसी इररिलेवेंट है, मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, बाद में समझेंगे. सो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस that is calculated between a standard electrode and a standard hydrogen electrode. तो फिजिक्स में ना यू हैव अ थिंग कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. तो डेफिनेशन ये कह रही है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच में. तो अभी हमें इसका कुछ नहीं पता. ठीक है, जस्ट इग्नोर द डेफिनेशन, वो मैंने खाली इसलिए लिखी है ताकि क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेते हैं. अभी डेफिनेशन समझनी है, व्हाट डज दैट मीन. नाउ कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, पता किसका लगेगा किसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, किसने इलेक्ट्रॉन
गेन करना है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे पास सोडियम है और मेरे पास ना क्लोरीन है। बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, मुझे बताओ सोडियम ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन लूज करना है, गेन करना है? Lose. But we know it's a very reactive metal. It wants to lose electrons, right? और क्या ये बहुत strongly electron lose करना चाहती है? Like, is it going to be a vigorous reaction? Yes, sir. It will be vigorous. ठीक है, so it likes to lose. तो सोडियम के बारे में मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है सोडियम के बारे में कि I know it's going to lose exactly one electron. मुझे ये भी पता है it's going to lose just one electron, right? And it's going to be a vigorous reaction. अच्छा, उसी तरह मुझे क्लोरीन का भी पता है भाई। क्लोरीन जो है वो कितने गेन इलेक्ट्रॉन करता है? एक ही करता है। लाइक वन ऑफ द एटम्स gains one electron. And I know that chlorine is also kind of reactive. Group 7 में जो टॉप पे होते हैं, they're reactive, so it's probably going to be a vigorous reaction. अच्छा, तो इन दोनों के बारे में तो मुझे पता है कि इन्होंने क्या करना है। मसला आ जाता है इसके बारे में। लेट्स से Mn+4 है, तो अब इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसने क्या करना है। I don't know whether it likes to lose electrons and would it like to form Mn+7, या whether it's going to gain electrons and would like to form Mn. तो इसके बारे में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं जिनका हमें पता है कि उन्होंने करना क्या है। तो सोडियम का हमें पता है, I know what sodium wants to do. So I'm going to make an electrode for sodium. The electrode would kind of look like this. I'm going to take अच्छा, मैं हर सब्सटेंस का ना एक इलेक्ट्रोड बना सकता हूँ, ठीक है? This is how I'm going to make an electrode. I'm going to take a piece of sodium and I am going to take a beaker and I'm going to dip that piece of sodium into a solution that contains lots of sodium ions. तो ये मेरा ना सोडियम का इलेक्ट्रोड बन गया है कि मैंने सोडियम का पीस लिया है और सोडियम आयंस के सॉल्यूशन में ना उसको डिप कर दिया, और इस इलेक्ट्रोड को ना मैं एक तार के साथ कनेक्ट करके वोल्ट मीटर लगा के मैं इसकी वोल्टेज मेजर करूंगा। अच्छा, so I'm going to try and measure the voltage against some reference point. अब गौर से सुनो, होगा क्या? पहला काम कि we know that sodium likes to lose electrons. तो what will happen? सोडियम जो है ना, यहाँ पे जो मेटल सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा and it will start to form sodium ions. This is the reaction that will happen. That sodium would start to lose electrons because it's got a very strong tendency to lose electrons. तो ढेर सारे ना सोडियम आयंस बनना शुरू हो जाएंगे। सोडियम की जो मेटल की रॉड है ना, that will start to dissolve. A lot of sodium ions are going to be produced. ये क्लियर है ये बात? Yes or Yes, no? sir. से बाकियों को आमना, मलिहा, Yes, मिराहे, sir. ठीक है। अच्छा, तो पहला काम ये हुआ है कि जैसे मैंने सोडियम को प्लेस किया ना, सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, सोडियम रियली लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयंस बनाना शुरू कर दिया, डिसॉल्व होना शुरू हो गया। तो क्वेश्चन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं? व्हाट्स हैपनिंग टू दोज इलेक्ट्रॉन्स? सो रिमेंबर के व्हाट इज हैपनिंग इज, एक सेकेंड,
अच्छा, now remember what's happening is कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इधर पीछे रह गए मेटल की रॉड के ऊपर, क्योंकि इट्स अ मेटालिक रॉड. मेटालिक रॉड में क्या होता है? यू हैव delocalized electrons. What does a metallic rod look like? It's metal atoms in a sea of free moving electrons, right? और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इधर उधर घूम रहे हैं. तो that's what a metallic rod looks like. It's got delocalized electrons. लेकिन अब सोडियम बार बार इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मेटालिक रॉड के ऊपर है वो क्या होते जा रहे हैं? The number of delocalized electrons are becoming more in number, right? और ये कहानी चलती रहेगी. सोडियम हर दफा ना आयन बनेगा, it's very reactive, it will dissolve. हर दफा पीछे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा. और आपकी जो मेटालिक रॉड है ना, that is becoming more and more negatively, it's becoming negatively charged. उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता जा रहा है और आयंस बनते जा रहे हैं. सोडियम डिसॉल्व होता जा रहा है, वो पीछे इलेक्ट्रॉन्स जमा होते जा रहे हैं. अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन ये पूरा प्रोसेस खत्म कब होगा? When will it stop? कि मतलब सोडियम डिसॉल्व हो रहा है, हर दफा सोडियम आयंस बन रहे हैं सॉल्यूशन में, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्यूमुलेटिंग ऑन द मेटालिक रॉड. वैसे भी तुक्का लगा दो, कब स्टॉप होगा? When the electrode finishes up? ठीक है, one of the answers that कि भाई सोडियम खत्म हो गया, the sodium is gone, so then the reaction stops. But the thing is, this process will stop a lot earlier. The reason is कि हर दफा इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन्स accumulate होते जा रहे हैं, and solution has more and more positive ions. And every time the negative charge continues to build up on the metallic rod, right? There's going to come a point when the negative charge on the metallic rod would become so large कि उसके ऊपर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि वो क्या करेगा कि वो जाएगा और सॉल्यूशन में से आयंस को वापस अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. तो the point is it's not going to be an endless process in one direction. It's going to stop very quickly. मतलब ये कंटिन्यू नहीं कर सकता. It's going to become unfeasible after a certain point. कि नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं they would start pulling the sodium ions back. And at that point there's going to be a reversible reaction. यानी ये जो रिएक्शन हमने जिसका एरो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में था वो रिवर्सिबल हो जाएगा. It will also start going in the backward direction. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, बाकी वो क्लियर है? ज़ैनब, रिदा, सानिया. Yes, sir. अच्छा, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? योर इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग दिस वे कि सोडियम का मेटालिक रॉड डाला था, सोडियम इमीडिएटली बहुत रिएक्टिव है, it started going in the forward direction, started losing electrons, and the electrons all accumulated on the metallic rod, and lots of sodium ions were produced. But it will not happen endlessly. At a certain point, there would be so many electrons on the metallic rod, इतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा कि वो वापस सोडियम आयंस को वापस अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. अब फिर वो रिवर्सिबल हो जाएगा कि हर दफा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डिसॉल्व होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, वो वापस किसी और सोडियम आयन को अट्रैक्ट कर लेगा. और उस पॉइंट पे when this reaches equilibrium, at that point the negative charge on the metallic rod becomes constant. फिर वो चेंज नहीं होगा क्योंकि हर दफा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई और इलेक्ट्रॉन आके गेन कर लेगा. तो once equilibrium is reached, so the charge या potential that's built up on the electrode, it becomes constant. ये भी clear है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, so your potential is going to become constant.
और आप वोल्ट मीटर से ना वो पोटेंशियल मेजर कर लो। अच्छा, डेटा बुकलेट में ना वैल्यू दी हुई है, दैट्स नोन एज द ई नॉट। द पोटेंशियल इज -2.71 volts. So that's a highly negative potential. तो नेगेटिव, अगर मेटालिक रॉड के ऊपर ना नेगेटिव पोटेंशियल बिल्डअप हो गया ना, दैट व्हाट डज दैट इंडिकेट? दैट इंडिकेट्स कि भाई इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने का बहुत शौक था. इट रियली रियली लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट. सो तो पूरी केमिस्ट्री जो है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका जो मेन पॉइंट है ना वो ये है. And remember, you can make electrodes out of any substances, and we're going to do that in a short while. अभी तो हमने सिर्फ सोडियम का बनाया. अच्छा, so the main point is potentials lower E naught, yani negative potential, that is a lower potential, indicates a strong tendency to lose electrons. मतलब अगर आपका पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब वो इसलिए आ रहा है कि वो भी उसको, वो इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है कि रॉड के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए. सो लोअर ई नॉट इंडिकेट्स tendency to lose electrons. तो ये आपका पहला पॉइंट है. पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी पॉइंट पे है. और एक इसका ऑपोजिट पॉइंट है, विच इज उल्टा भी होगा कि हायर पोटेंशियल जो है वो इंडिकेट करेगा अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, एक और चीज मैं यहां पे बता दूं कि पोटेंशियल्स जो है ना, इट्स अ रिलेटिव टर्म. कोई भी आप चीज मेजर करते हो ना, जैसे आप हाइट मेजर कर रहे हो, तो हाइट जो होती है वो मेजर होती है अगेंस्ट द रेफरेंस पॉइंट. कि आप ना किसी चीज से कंपैरिजन में हाइट मेजर करते हो. मतलब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू की खुद से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. मतलब द वैल्यू इटसेल्फ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. उसका जो रिलेटिव कंपैरिजन होता है ना, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. मैं हाइट के एग्जांपल पे आ जाता हूँ कि अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो, तो लेट्स से बिल्डिंग्स की हाइट है. अब वो आप मेजर कहाँ से करोगे? व्हाट इज योर रेफरेंस पॉइंट? तो आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा. जिस तरह कोई कहता है कि जी सी लेवल से मेजर कर लो, तो फिर आप सी लेवल से ना बिल्डिंग्स की हाइट और माउंटेन्स की हाइट ना मेजर कर रहे होगे. तो द पॉइंट इज दैट वैल्यू इज अनइम्पोर्टेंट. वो जो रेफरेंस पॉइंट है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द टॉलेस्ट बिल्डिंग वुड स्टिल, या द टॉलेस्ट माउंटेन वुड स्टिल बी द टॉलेस्ट माउंटेन. जो मर्जी रेफरेंस पॉइंट यूज कर लो. आप कह लो कि जी किसी भी लेवल को आप कह लो कि यहां से मेजर करना शुरू कर दो, ठीक है. तो रिमेंबर, वैल्यूज, ये जितनी भी मेजरमेंट्स होती है ना, ये किसी के रेफरेंस पे होती है. जब आप वेट मेजर करते हो ना, तो आप केजीज के रेफरेंस में मेजर करते हो. केजी क्या है? केजी इज अ रैंडम स्टोन समबडी डिसाइडेड इन यूरोप कि भाई एक स्टोन है, उसको हम कहते हैं केजी. और दुनिया की सारी चीजें ना उसके उसके रेफरेंस से मेजर होंगी. तो किसी और मुल्क में पाउंड यूज होता है, स्टोन यूज होता है. तो इट डजंट मैटर कि आप जिस मर्जी उसमें जो मर्जी रेफरेंस पॉइंट यूज करो, द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट वुड स्टिल बी द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट. उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी. मतलब पाउंड्स में उसकी वैल्यू कुछ और होगी, केजीज में उसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन इट विल स्टिल बी द हेवीएस्ट. तो पोटेंशियल्स में वापस आ रहा हूं. तो रिमेंबर, द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल के वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो मर्जी है, दैट इज नॉट रेलेवेंट. तो इसलिए हमेशा लोअर और हायर में उसको देखा करो, ठीक है. कि इट्स ऑलवेज अ रिलेटिव. पोटेंशियल जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं. तो रिलेटिव इन द सेंस के इज इट हायर देन समथिंग और इज इट लोअर देन समथिंग. तो लोअर पोटेंशियल, तो हमेशा हम इसको ना, जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसकी असल में शायद वैल्यू नेगेटिव ना हो. असल में उसकी वैल्यू जो भी हो सकती है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकती है. वो आप अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर लो, द वैल्यू वुड चेंज. सो इसलिए you look for the lower potential, that is the one that has a tendency to lose electrons. And vice versa, the higher potential, which is the positive potential, जो कि शायद असल में पॉजिटिव ना हो, असल में उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन relatively speaking that must be the higher potential. पॉजिटिव जो होगा वो हायर होगा, और नेगेटिव जो होगा that is going to be the lower potential. ये बात समझ आई है मेरी? Yes, sir. ठीक है. तो the thing is,
अच्छा, तो एक तो ये याद रखना कि इसको ना, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर बीच में ना पढ़ना, लोअर और हायर में सोचना, ठीक है। और लोअर को दे रेफर टू इट एज द नेगेटिव पोटेंशियल, लेकिन हो सकता है उसकी असल में वैल्यू नेगेटिव ना हो। बट एज एन एग्जांपल, मैं वैसे फिजिक्स का एग्जांपल दे देता हूँ कि आई हैव अ रेजिस्टर, और उस रेजिस्टर के साथ दो तारें लगी हुई हैं, और वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज शो हो रही है ना ऑन द, मतलब जिस तरह भी मेजर कर रहे हैं, 10 वोल्ट्स है और यहाँ पे 50 वोल्ट्स है। पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द पोटेंशियल दैट्स अपीयरिंग ऑन द रेजिस्टर, मतलब क्या होगा? ठीक है, सो इट्स 40 वोल्ट। सो रिमेंबर इट्स अ रिलेटिव कंपैरिजन, कि दोनों का कंपैरिजन करो, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, एंड व्हाट अपीयर्स ओवर हियर इज, तो रेजिस्टर के ऊपर तो 40 वोल्ट्स अपीयर हो रही है। वुड इट मेक एनी डिफरेंस अगर अगर मैं लेट्स से एक और बैटरी कनेक्ट कर दूं जिसके ऊपर ना, टर्मिनल्स के ऊपर ना उन्होंने कोई और वोल्टेज शो की हुई है, लेट्स से यहाँ पे 100 वोल्ट शो की हुई है इस साइड पे, और यहाँ पे 140 वोल्ट शो की हुई है, तो बताओ रेजिस्टर के ऊपर क्या वोल्टेज अपीयर हो रही है? इट्स स्टिल गोइंग टू बी 40. 40, राइट? सो द पॉइंट इज कि जो वैल्यू है ना वो irrelevant है, it's the relative comparison. This is the lower potential, this is the higher potential. You're going to think of this as the negative side and this one as the positive terminal. Is that clear? Yes, sir. ठीक है, और मतलब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप इसको कह दो कि क्योंकि वो 100 और 140 आप इसको कह दो ये 0 वोल्ट है और ये 40 वोल्ट है, इट विल स्टिल, आई मीन कैलकुलेशंस करंट निकालने में नथिंग वुड चेंज, ठीक है, एवरीथिंग वुड एग्जैक्टली रिमेन द सेम। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, थिंक ऑफ इट लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल, और इसका जो वाइस वर्सा है ना, अब उल्टा कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा टाइम है। दैट मीन्स high E naught indicates a tendency to gain electrons. So let's talk about the other one, the tendency to gain electrons. Cl2 है मेरे पास, तो हमें क्या पता है कि Cl2 जो है it really likes to gain electrons. तो मुझे पता है कि भाई Cl2 को अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स it really likes to gain electrons, right? अब Cl2 गैस है, तो गैस को ना गैस जार के अंदर रखना पड़ेगा, और ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इलेक्ट्रोड्स बनाना ना, अभी मैं इलेक्ट्रोड्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, समझाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो ये बनाने वाला पार्ट हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करूंगा, I'm going to take a gas jar with Cl2 and I'm going to dip it into a solution that contains Cl ions. अब होगा क्या, मुझे पता है कि हमें पहले से पता है कि Cl2 really likes to gain electrons to form Cl-1, तो Cl2 आया है। अब मसला ये है वो इलेक्ट्रॉन गेन किससे करे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोड है ही नहीं, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक मेटालिक रॉड चाहिए विच हैज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Cl2 को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, Cl2 has a tendency to gain electrons, so I'm going to add a platinum electrode in the middle. मतलब platinum is a metal, तो मेटल के पास वही इशू होगा, उसके पास इट्स गोइंग टू हैव, कहाँ गया हमारा मेटल, कहाँ गया, तो मेटल के अंदर ना यू हैव मेटल आयंस इन अ सी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो मेटालिक इलेक्ट्रोड होना लाजमी है। तो अब आपके पास ना Cl2 का मॉलिक्यूल आया, उसके पास इट्स गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्चुअली गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको नजर आए प्लैटिनम के इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने क्या किया, प्लैटिनम के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू कर दिया। तो प्लैटिनम की जो रॉड होगी मेटालिक, उसके वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, मतलब हर दफा Cl2 का मॉलिक्यूल आएगा, Cl2 has a strong tendency to actually gain electrons,
वो प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन बोरो करता रहेगा और सोल्यूशन में क्या बनते जाएंगे, आयन, Cl आयंस बनते जाएंगे, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ Cl आयंस आर गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड और क्लोरीन आई जा रहा है, क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहा है। प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड इज बिकमिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो क्लोरीन आया, इससे इलेक्ट्रॉन्स बोरो किए क्योंकि क्लोरीन को इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पॉजिटिव होती जा रही है। रिमेंबर ये भी एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगा रिएक्शन, मतलब ये भी इसी तरह बस एक ही डायरेक्शन के अंदर नहीं होता रहेगा। व्हाट विल हैपन एट अ सर्टेन पॉइंट इज कि पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होता जा रहा है। एट अ सर्टेन पॉइंट द पॉजिटिव चार्ज वुड बिकम सो लार्ज कि वो Cl-1 से इलेक्ट्रॉन्स वापस खींचना शुरू कर देगा। तो दैट पॉइंट देयर इज गोइंग टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि पहले तो था कि Cl2 कन्वर्ट हो रहा था Cl-1 में, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट द पॉजिटिव चार्ज बिकेम सो लार्ज कि उसने वापस Cl-1 से इलेक्ट्रॉन्स खींचने शुरू कर दिए, एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन एन इक्विलिब्रियम वुड बी रीच्ड। तो रिएक्शन जो है ना वो वापस उल्टा भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उस पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज पे कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर दफा Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहीं और से इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे कर लेगा, उनकी गिनती पूरी कर लेगा। तो आपने क्या करना है उस पॉइंट पे, यू गोना टेक अ वोल्टमीटर एंड मेजर द वोल्टेज ऑफ द, अच्छा, यू गोना मेजर द वोल्टेज ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। और वोल्टेज क्या आएगी, वो काफी पॉजिटिव आएगी, जो कि डेटा बुकलेट में इन दिस केस इट्स 1.36 वोल्ट्स, वी नो दैट इट्स गिवन इन द डेटा बुकलेट। तो हायर पोटेंशियल का रूल कर लोगे, हायर पोटेंशियल जब आएगा आपके पास, दैट मींस द मोर पॉजिटिव हाई ई नॉट, व्हिच इज बेसिकली योर पॉजिटिव ई नॉट। अगर बहुत पॉजिटिव हाई ई नॉट आए तो दैट इंडिकेट्स that the substance really likes to gain electrons. So it indicates tendency to gain electrons. तो ये आपका दूसरा पॉइंट है और ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब मतलब आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यू कैन मेक इलेक्ट्रोड आउट ऑफ एनी सब्सटेंस। नेक्स्ट क्लास वी लर्न हाउ टू मेक दीज इलेक्ट्रोड्स। but just remember कि हायर पोटेंशियल इंडिकेट्स अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो हायर पोटेंशियल है, इसलिए वो पॉजिटिव बॉब है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का इतना शौक है कि उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे गेन कर लिए, और आपका जो इलेक्ट्रोड है दैट इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड अ लोअर ई नॉट इंडिकेट्स अ टेंडेंसी टू एक्चुअली लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए, वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि द पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रोड इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव। ठीक है, ये सारों को क्लियर है ये बात? Yes, sir. सारों को क्लियर, कोई क्वेश्चन नहीं है? रिदा, जैनब, मरियम, इज दिस क्लियर? आमना? Yes, sir, it's clear. Clear, sir. चलो ठीक है। और ये याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे जो भी हम डिटेल पढ़ेंगे ना, अभी तो बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है। हर जगह बस दिमाग में बैठा लो, लोअर ई नॉट उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, हाई ई नॉट उसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, बस ये दिमाग में बैठा लो। बाकी चीजें फिर होती रहेंगी, ठीक है। वो डिटेल जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, ठीक है। चले, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।